को नियम 370 के अधीन मामलों को आज उठाने की अनुमति दी गई है और जो उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं वे 20 मिनट के भीतर मामले का पाठ व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर भेज दें। केंद्रीय आइटम नंबर 18 केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रमांक 18 में अपने नाम के सामने उल्लेखित केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार करना तथा पारित किए जाने का अनुरोध करता हूं। आप कुछ बोलिए, बाद में बोलेंगे। सभापति महोदय, आज मैं आपके सामने और आपके माध्यम से सदन के सामने केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 का एक संशोधन प्रस्ताव लेकर आए हैं। देश में जिस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर काम शुरू हुआ है, जिस प्रकार की मल्टी मोडल मल्टी सेक्टरल इंफ्रास्ट्रक्चर की रूप बनने लगा है, उसके लिए उपयुक्त मानव संबल की भी आवश्यकता है, अप्रोप्रिएट ह्यूमन रिसोर्स की भी आवश्यकता है। उसको ध्यान में रखते हुए सरकार की ये निर्णय हुई है कि हमें एक वैश्विक स्तर की ग्लोबल स्टैंडर्ड मल्टी मोडल मल्टी सेक्टरल एक एकेडमिक इकोसिस्टम नॉलेज इकोसिस्टम बनाने की आवश्यकता है। उसी के तहत एक केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसको हमारी सरकार की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो एक दूरदृष्टि है कि एक गति शक्ति मिशन बनी है। गति शक्ति परिकल्पना के अंतर्गत सारे विभागों की एक प्रकार से एकीकरण करना नीति के लिए, नियम के लिए इसकी एक नई ढांचा बनते दिख रहा है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन के सारे विभाग, रेलवे, रोड सेक्टर, वाटरवेज, एविएशन सेक्टर, पोर्ट सेक्टर तथा आईटी जैसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे को सभी प्रकार की संवाद की, दूर संचार की, गमनागमन की व्यवस्था को गति शक्ति की प्लेटफॉर्म पे एक करने की आज योजना बन रही है, क्रियान्वयन हो रही है। ये इस प्रकार की 21st सेंचुरी इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाने में देश आज जुटी है। उचित होगा उस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मानव संबल भी वैसे ही बने। इसीलिए मैंने कहा मल्टी सेक्टरल, मल्टी मोडल, मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डिसिप्लिनरी वैश्विक स्तर की एक विश्वविद्यालय बने। एक रेलवे विभाग की अगुवाई में पिछले 2018 से एक डीन ऑफ यूनिवर्सिटी चल रहा है। आज आवश्यकता हुई है इसकी परिधि को सर्वव्यापी करना, सर्वदेशी करना। इसीलिए यह संशोधन प्रस्ताव विश्वविद्यालय 2009 कानून में हम लेके आए हैं। आपके विचारार्थ, इस सदन के विचारार्थ हम स्थापित कर रहे हैं। नमस्कार अध्यक्ष जी, आदरणीय सभापति जी, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 प्रस्ताव के समर्थन में मैं खड़ी हुई हूँ। आदरणीय सभापति जी, सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा पारित किए जाने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 के समर्थन में आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही शिक्षा का आध्यात्मिक महत्व रहा है। शिक्षा न केवल मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए बल्कि समाज और देश के विकास के लिए भी अति आवश्यक है। शिक्षा का महत्व एक
महत्वपूर्ण उद्देश्य रोजगार प्रदान करना भी है और तकनीकी रूप से देश को उच्चता के शिखर पर पहुंचाना है। माननीय सभापति जी, रेल का परिचालन अपने ही आप में एक जटिल प्रणाली के जरिए होता है। विभिन्न सिस्टम आपस में इंटरलिंक होते हैं। इसमें अलग अलग तरह की विशेषताएं एवं तकनीकी स्किल की जरूरत होती है। इन सिस्टम और स्किल को विकसित करने में वर्षों लग जाता है। आदरणीय सभापति जी, पिछले कुछ वर्षों में रेलवे में नई नई तकनीकें आई है, जैसे कि सिग्नलिंग प्रणाली यानी कवच, नई ट्रेन यानी वंदे भारत, जिनका उद्देश्य मुख्य रूप से यात्रा के समय को कम करना, उसे अधिक सुखमय बनाना और 100% सुरक्षा की गारंटी देना रहा है। इतनी जटिल तकनीकी प्रणाली को चलाने के लिए कर्मियों को एक गहन आरंभिक प्रशिक्षण दिया जाता है और समय समय पर रिफ्रेशर कोर्स भी कराए जाते हैं, क्योंकि रेल सेवा में आने से पहले उनके पास विशेषज्ञता और तकनीकी स्किल नहीं होते जो उस काम के लिए आवश्यक होते हैं। ऐसे में हमें तकनीकी रूप से शिक्षित प्रशिक्षित युवक युवतियों की आवश्यकता है, जिनकी मूल तकनीकी शिक्षा में ही ऐसे तत्वों का समावेश हो कि वो पाठ्यक्रम पूरा करने के साथ ही ट्रेन संचालन बारीकियों और पूरी तरह जान जाए, ताकि उन्हें तुरंत काम पर लगाया जाए। आदरणीय सभापति जी, दुनिया में हर बड़े रेलवे ने रेलवे प्रणालियों को अध्ययन, शोध और स्किलिंग के लिए विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं, जैसे कि मैसाचुसेट्स सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका 1861, रेल टेक यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अमेरिका 1867, रेलवे टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जापान 1986, मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ रेलवे इंजीनियरिंग रूस 1896, बर्मिंघम सेंटर फॉर रेलवे रिसर्च एंड एजुकेशन इंग्लैंड 1972, बर्मिंघम जियो ऑटिंग यूनिवर्सिटी चीन 1896। आदरणीय सभापति जी, अगले दशक में भारत दुनिया का सबसे युवा जनसंख्या वाला देश होगा और इन युवाओं को उच्चतर गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने पर ही भारत का भविष्य निर्भर करेगा। बिग डाटा, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में हो रहे बहुत वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के चलते ऐसे कुशल कामगारों की जरूरत और मांग बढ़ेगी, जो उच्च स्तरीय टेक्निकल योग्यता रखते हैं। वैश्विक परिस्थिति में तीव्र गति से आ रहे परिवर्तनों की वजह से यह और भी जरूरी हो गया है। आदरणीय सभापति जी, इन सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 2018 में एक नई शुरुआत केंद्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान यानी NRTI के रूप में की गई। इस संस्थान में पाठ्यक्रमों को इस तरह से गठन किया गया है कि यहां से पास होने वाले छात्र रोजगार एवं स्वरोजगार के काबिल हो। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी यह कहना है कि हम भारत में एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं जहां भारत के नौजवान रोजगार तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार सृजन करने वाले बने। इस उद्देश्य का पूरा करने के हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने के नेतृत्व में मेरे संसदीय मत क्षेत्र वडोदरा के नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट NRTI को केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी गति शक्ति का दर्जा देने का निर्णय को मंजूरी प्रदान करनी है। आदरणीय सभापति, जिससे इस गति शक्ति विश्वविद्यालय का दर्जा मिलेगा, इससे इसकी क्षमता और बढ़ेगी। यहाँ और भी नए पाठ्यक्रम चलेंगे। इसका लाभ न केवल गुजरात के युवक युवतियों को होने वाला है बल्कि देश भर के युवाओं को भी मिलेगा। गति शक्ति विश्वविद्यालय के संबंध में
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल रेल परिवहन से जुड़े हुए विषयों के शिक्षण के लिए स्थापित नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसमें मेट्रो रेल, सड़क मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग आदि से जुड़े हुए पाठ्यक्रम का भी समावेश किया गया है। आदरणीय सभापति जी, इस विश्वविद्यालय में ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, एजुकेशन और कौशल विकास के संबंधित पाठ्यक्रमों को भी साथ में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी के साथ साथ एम्प्लॉयड रिसर्च को भी महत्वपूर्ण स्थान मिलेगा। इस विश्वविद्यालय का केंद्रीय कैंपस मेरे संसदीय मत क्षेत्र वडोदरा को मिला है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का मेरी ओर से और मेरी वडोदरा लोकसभा की जनता की ओर से बहुत ही आभार प्रकट करती हूँ। साथ में मैं आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, आदरणीय रेल मंत्री श्री अश्विनी जी और एमओएस रेल मंत्री हमारी दर्शना बहन को भी अभिनंदन और आभार प्रकट करती हूँ, क्योंकि देश में कहीं अलग अलग स्थानों पे भी ये केंद्रीय विश्वविद्यालय का अलग अलग स्थानों पे भी कैंपस स्थापित होने वाले हैं, लेकिन उनका मुख्य जो कैंपस है, केंद्रीय कैंपस, वो मेरे वडोदरा को मिला है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत ही अभिनंदन और आभार करती हूँ। आदरणीय सभापति जी, मेरे संसदीय मत क्षेत्र वडोदरा में गतिशक्ति विश्वविद्यालय को मंजूरी देने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एवं धर्मेंद्र प्रधान जी का, रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी जी और माननीय रेल राज्य मंत्री बहन श्री दर्शना बहन को सहृदय धन्यवाद करती हूँ और साथ ही उक्त सभी कार्यों को समय से संपन्न होने के कारण निश्चित रूप से देश के विकास को नया आयाम मिलेगा और सभी कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथाक प्रयास से संभव हो पा रहा है। अंत में मैं इस बिल का तहे दिल से समर्थन करती हूँ। धन्यवाद। राय जी, स्वागत श्री कौशलेंद्र कुमार जी। सभापति महोदय, आपने मुझे केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार द्वारा यह बिल मुख्य रूप से गुजरात राज्य के बड़ोदरा स्थित रेलवे महाविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देकर उसका नाम गति शक्ति विश्वविद्यालय करने का निर्णय लिया है। यह स्वागत योग्य है। इसका नाम गति, यह अब सरकार का विचार 100 लाख करोड़ रेलवे के आधुनिकीकरण की परियोजनाओं में खर्च करने का है, तो यह केंद्रीय विश्वविद्यालय उन सभी आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम होगा जिसके आने वाले समय में देश को जरूरत है। गति शक्ति केंद्रीय विश्वविद्यालय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग, नगर विमान, मोटर शिपिंग और जल परिवहन मंत्रालय के लिए भी यह सहायक सिद्ध होगा। मैं बिहार प्रदेश से आता हूं, जहां की धरती प्राचीन पठन पाठन के लिए विश्व धरोहर के रूप में नालंदा को जाना जाता है। सभापति महोदय, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय पर काफी सरकार ने सहायता किया है, ये बधाई के पात्र हैं। इसी क्रम में नालंदा नव महाविहार डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जहां राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं के प्राचीन शास्त्रों की विषय की पढ़ाई और शोध भी किया जाता है। सभापति महोदय, मेरा सरकार से मांग है कि नव नालंदा महाविहार डीम्ड यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया जाए। इससे वहां वर्तमान में पढ़ाए जा रहे विषयों के साथ साथ साइंस के उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के साथ साथ पढ़ाई प्रारंभ हो जाएगी। सभापति महोदय, बिहार राज्य का पटना यूनिवर्सिटी भी एक प्राचीन यूनिवर्सिटी है। इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काफी प्रयासरत हैं।
केंद्र सरकार द्वारा भी आश्वासन मिला है, किंतु इस दिशा में अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल जी की इच्छा थी और उप राष्ट्रपति महोदय भी अपनी पिछली बिहार यात्रा के दौरान आश्वासन दिए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी भी बिहार की जनता से वायदा किए थे कि पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाएगा। मैं सरकार से मांग करता हूं कि पटना यूनिवर्सिटी को नव नालंदा महाबिहार डीम्ड यूनिवर्सिटी को सरकार केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे। इन्हीं शब्दों के साथ इस विधेयक का मैं समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अपने जवाब में केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए पटना में करने का प्रस्ताव जरूर रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय जी, आपने मुझे केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन के लिए मेरी व बहुजन समाज पार्टी का पक्ष रखने का मौका दिया। इसके लिए मैं आपका और आपके साथ साथ अपनी पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान NRTI विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के तहत एक मानित विश्वविद्यालय को एक स्वायत्त केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित करने का उपबंध करता है, जिससे गति शक्ति विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। यह एक सराहनीय कदम है। रेलवे की तरह ही मेट्रो, एविएशन, शिपिंग, हाईवे, ट्रांसपोर्ट और इकोनॉमिक्स भी टेक्निकली कॉम्प्लेक्स है और इन क्षेत्रों में भी बहुत अधिक तकनीकी विकास हुआ है, जिन कारण वहां भी अच्छे उच्च स्तर की तकनीकी शिक्षा और योग्यता की भी भारी आवश्यकता है। लेकिन गति शक्ति विश्वविद्यालय को परिवहन क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीकी के निर्माण की सुविधा प्रदान करने में भी सक्षम होना चाहिए। इसके लिए क्षमता और बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के साथ साथ प्रशिक्षित पेशेवरों की संख्या बढ़ाने की भी आवश्यकता है, अन्यथा पूरी नीति के विफल होने का खतरा पैदा हो सकता है। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि हमारे लाखों बच्चे डिप्लोमा और इंजीनियरिंग करके भटक रहे हैं, उन लोगों को भी ध्यान में रखते हुए ऐसे विश्वविद्यालयों में स्पेशल डिप्लोमा या स्पेशल कोर्स कराकर उनको नौकरी देने का काम किया जाए। यह देश में केवल पहला गति शक्ति विश्वविद्यालय है और देश में कुशल श्रमिकों की वर्तमान आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऐसे कई और विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है। इसे देखते हुए सरकार शिक्षा, कौशल विकास, इलेक्ट्रॉनिक आदि जैसे कई क्षेत्रों में गति शक्ति ब्रांड को लागू करने पर विचार कर सकती है। परिवहन के क्षेत्र के लिए व्यापार विस्तार, अनुसंधान और विकास और आउट ऑफ द बॉक्स दृष्टिकोण की आवश्यकता है और मंत्रालय को दुनिया भर में सर्वोत्तम प्रथाओं और नवीन मॉडलों को अध्ययन करने पर भी विचार करना चाहिए, जिन्हें भारत में भी दोहराया जा सकता है। गति शक्ति ब्रांड का उच्च शिक्षा, प्रौद्योगिकी, सतत विकास जैसे कई क्षेत्रों में लाभ उठाया जा सकता है और इससे देश में प्रशिक्षित और कुशल श्रमिकों की मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी, जो भी भारत की ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। लेकिन इसी के साथ साथ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान केंद्रीय विश्वविद्यालयों में SC, ST, OBC वर्ग के प्रोफेसरों की कमी के ऊपर भी आकृष्ट करना चाहूंगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अभी भी संविधान के अनुरूप आरक्षित कोटे को भी पूरा नहीं किया गया है। कई अभ्यर्थियों के अयोग्य घोषित करके उनके रिक्त पदों पर जगह होने के बावजूद भी भरा नहीं गया है, जबकि उनकी योग्यता में कोई कमी नहीं है। जैसा कि मुझे ज्ञात है, एक पद हेतु आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं की जा सकती, लेकिन विश्वविद्यालय यदि एक है तो समस्त नौकरियों को जोड़कर उसकी संख्या के अनुसार आरक्षण दिए जाने की हमारी बहुजन समाज पार्टी मांग करती है। केंद्रीय विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं को छात्रवृत्ति विशेष रूप से ST, SC और OBC वर्ग के लोगों को अनिवार्य रूप से दिए जाने की भी मैं मांग करती हूँ। उसके अलावा अभी हाल में ही लगभग 10 दिन पहले हिंदू अखबार में छपे एक आर्टिकल के अनुसार IIT दिल्ली में 8 विभागों में SC, ST, OBC
के छात्रों द्वारा पीएचडी हेतु कुल 637 पदों का आवेदन प्राप्त हुआ, लेकिन उसमें से एक भी पद की भर्ती नहीं की गई थी। यह बहुत ही दुखद है। इस तरह के आंकड़े देखने के बाद सहज ही समझा जा सकता है कि SC, ST, OBC के साथ शिक्षा में भेदभाव का स्तर कितना बढ़ता जा रहा है। साथ ही में इस सदन में संविधान की दुहाई देने वाले संविधान के धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस प्रकार की घटनाएं तमाम केंद्रीय विश्वविद्यालय में आए दिन देखने में मिलती है, लेकिन सरकार कभी भी गंभीर होकर दोषियों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई नहीं करती है। इस तरह से इनका मनोबल बढ़ता है। मेरी सरकार से और माननीय मंत्री जी से मांग है कि ऐसे प्रकरणों पर सरकार गंभीर रूप से ध्यान दे और ऐसी चीजें आगे न बढ़े। इन्हीं के साथ साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत भारत के पूरे शिक्षा के स्ट्रक्चर को बदलने का एक नया आयाम दिया, एक नया प्रयास आरंभ किया। मेरे वरिष्ठ साथी माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने जिस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आगे बढ़ाया है, उसी का एक बहुत अच्छा उदाहरण है आज का ये बिल। केंद्रीय सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट में अमेंडमेंट का। माननीय अध्यक्ष जी, आप सब जानते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेक्टर है, और स्पेशली अगर हम देखें रेलवे और मेट्रो, तो ये तो अपने आप में ऐसे सेक्टर्स हैं जिन सेक्टर्स की कॉम्प्लेक्सिटी का कोई अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा माननीय अध्यक्ष जी। रेलवे में तो ये परिस्थिति होती है कॉम्प्लेक्सिटी में कि मान लीजिए शरीर के पाँव में अगर चोट लगे तो दर्द पाँव में होता है, लेकिन रेलवे जैसी कॉम्प्लेक्सिटी में ये होता है कि पाँव में चोट लगे दर्द कहीं पे हाथ में होगा। यानी इतनी कॉम्प्लेक्स प्रणाली को अगर ठीक से चलाना है, आगे बढ़ाना है और उसको एक अच्छे तरीके से देश के जो एस्पिरेशंस हैं उन एस्पिरेशंस को आगे ले जाना है, तो उसमें टेक्निकल एजुकेशन का एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज की बहुत बड़ी जरूरत है माननीय अध्यक्ष जी। इसी धारणा के साथ, इसी विचार के साथ पिछले 2018 में नेशनल रेल ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट, नेशनल रेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की व्यवस्था की गई थी, जो कि एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी थी। उसके अच्छे रिजल्ट देख के अब एक बड़े पैमाने पे गति शक्ति यूनिवर्सिटी की आज ये परिकल्पना है जो आज सदन के सामने प्रस्तुत है। अध्यक्ष जी, इस गति शक्ति विश्वविद्यालय में मेट्रो, रीजनल रेल, लॉजिस्टिक्स, हाईवे, ब्रिज, पोर्ट, इन सारे सेक्टर से रिलेटेड जितना टेक्निकल नॉलेज का, जितना इंजीनियरिंग का, जितनी उसकी इकोनॉमिक्स का और जितनी उसकी फाइनेंस के विषय है, वो सारे विषय इसमें लिए जाएंगे। जो आप अगर देखें तो विश्व के करीब करीब सभी देशों में, अमेरिका में जैसे इलिनॉय यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी है, जापान में JRTI है, चाइना में बीजिंग में है, रशिया में है, करीब करीब हर बड़े देश में जहां भी रेलवे का बड़ा नेटवर्क होता है वहां पे एक यूनिवर्सिटी की कल्पना सब जगह हुई है। उसी कल्पना के साथ माननीय अध्यक्ष जी, गति शक्ति यूनिवर्सिटी की भी उसी प्रकल्प में, उसी भावना के साथ इसका डेवलपमेंट होगा। इस यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष जी 5 बड़े ऑब्जेक्टिव होंगे। पहला ऑब्जेक्टिव होगा ट्रांसपोर्ट फोकस्ड कोर्सेज, ऐसे कोर्सेज जो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हो, हाईवे ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन, मेट्रो से रिलेटेड, पोर्ट से रिलेटेड, हर तरह के इन सब ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड इसमें कोर्सेज होंगे। दूसरा होगा स्किल डेवलपमेंट का, जो कि स्किल इंडिया का फ्रेमवर्क है, उसी फ्रेमवर्क में स्किल डेवलपमेंट का। तीसरा इसमें रहेगा माननीय अध्यक्ष जी अप्लाइड रिसर्च, ऑपरेशंस रिसर्च, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ब्रिज, टनल, मैरीटाइम, पोर्ट कंस्ट्रक्शन, इन सब का अध्यक्ष जी स्किल डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क रहेगा, अप्लाइड रिसर्च का फ्रेमवर्क रहेगा। चौथा रहेगा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। बहुत जरूरत है एक अप्लाइड तरीके से टेक्नोलॉजी किस तरह से डेवलप हो, उसकी बहुत जरूरत है, उसका एक फ्रेमवर्क रहेगा। और पांचवा रहेगा ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस का। इन पांचों ऑब्जेक्टिव्स के साथ इस यूनिवर्सिटी को आगे लेके जाया जाएगा। इस यूनिवर्सिटी का अभी हेडक्वार्टर बड़ौदा में है, जैसा बहन संगीता ने कहा,
माननीय संगीता जी ने कहा और भी दूसरे वक्ताओं ने कहा, देश के और भी कई जगह इसके ऑफ कैंपसेस बनेंगे। उन ऑफ कैंपसेस में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरह व्यवस्था होगी। बहुत सारे विषय हैं जिनको बहुत अच्छे से पढ़ाने की जरूरत है ताकि स्वरोजगार भी मिले और रोजगार भी अच्छे से मिले। इन सबको ध्यान में रख के करा जाएगा। अध्यक्ष जी, हमारे देश में बातें होती है, कई बार हम कहते हैं हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, तेलुगु मीडियम, तमिल मीडियम। अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने नया एक डिजिटल मीडियम प्रारंभ किया है डिजिटल इंडिया के तहत, जिसमें डिजिटल टेक्नोलॉजीज को यूज करके एजुकेशन का, हेल्थ का, कई तरह के जो प्रभावशाली प्रयास हुए हैं। इस यूनिवर्सिटी में डिजिटल मीडियम का भी बहुत बड़ा एक रोल रहेगा। अध्यक्ष जी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के फ्रेमवर्क में जो गति शक्ति विश्वविद्यालय का आज सदन के सामने प्रस्तुतिकरण है, मैं निवेदन करूंगा सभी माननीय सदस्यों से, ये छात्रों के भविष्य का विषय। मैं विशेष निवेदन करूंगा ऑपोजिशन से कि वो लोग छात्रों के भविष्य के साथ बिल्कुल खिलवाड़ न करें, अपने अपने बेंच पे बैठे, अपनी अपनी जगह पे बैठे और इस बिल का सब के सब यूनानिमसली अनुमोदन करें। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष। श्री चंद्रशेखर साहू जी। Thank you, sir. You have allowed me to speak on the amendment of Central University Bill 2022. Sir, this bill, on behalf of the Biju Janata Dal and our leader, Sri Navin Patnaik ji, we support the bill, sir. Sir, if you go through the background of the bill and its summary and amendment, it's a very good bill and definitely it will help to have स्वरोजगार, जैसे कि माननीय मंत्री ने अभी बताया, they will have स्वरोजगार और अपॉर्चुनिटीज यंग इंडियंस को जरूर मिलेगा। Sir, when the government have been going to name this university as Gati Shakti Vishwavidyalaya after the name of government flagship program of PM Gati Shakti National Master Plan for multimodal connectivity and expand its jurisdiction in all over the country, to which I support this amendment in the Central University Bill 2022. Sir, there is no doubt that this Vishwavidyalaya will bring drastically change transport sector of the country. In my view, while bringing these amendments, we have also see and examine the criteria for setting up Central University in the country, because as of now, in all the states and union territories, New Delhi tops the chart of the Central University with as many as 7, the highest number of Central Universities, followed closely by Uttar Pradesh with 6 Central Universities and Bihar with 4 Central Universities. Manipur, Andhra Pradesh and Telangana contribute with their 3 universities to the national number of Central University. The total number of Central University in India are 54. Sir, you know, in my state, in Odisha, we have only 1 Central University, that is in the Adivasi area, Koraput district, where more than 70-80%, maybe 90% people are Adivasi. Sir, but when I have once visited there, still there is no academic facilities of all the academic professors, assistant professors, all are not being filled up, and research activities are not going on. And moreover, the present Vice Chancellor, I don't know the present situation, but the Vice Chancellor was
being staying at Bhubaneswar, not at the Koraput, sir. This is very, very unfortunate. So I bring the notice of the Honorable Minister to look after it. Sir, one of the objectives for setting up Gati Shakti Vishwavidyalaya may be the participation of young India talent, which constitute about 25% of our population, who get specialized talent in the transportation sector, carry out critically needed research and development. Sir, university means only research activities. So this will definitely help to have research facilities and new innovations, sir. Create innovative technologies which will encourage local manufacturing, making the nation self-reliant. Keeping in view of all above, first of all, we have to examine the criteria for setting up central universities in the country. There has been no uniformity, sir. In setting up the central university, we have seen that some of small states have more central university than the other states. This has been encouraging migration from state to other state. And to check such migration, there is a need to have policy for setting up of central university in states, sir. Sir, we have a large number of youth in my state, Odisha, and have only one central university. There may be the curriculum to be taught in the program offered by the university be aligned with the international best practice and based on requirement and developments of the transportation sector of the country, which are incorporated under Gati Shakti Vishwavidyalaya. However, a very small number of students from our state will get benefit of this university. I therefore demand the Union Minister, sir, for education, through you, sir, to set up more central universities so that the objectives of Gati Shakti Vishwavidyalaya are achieved and the youths of Odisha can equally contribute for the national development and economic growth of the country, which the Honorable Minister has also mentioned that there is a proposal to have more such universities in the country, sir. Sir, GSB will integrate the existing Central Training Institutes of Indian Railways as its encompasses utilizing the existing capacity, expertise and resources, and this infrastructure will not only leverage to offer degree programs but also industry-based courses. Sir, I have a doubt that these existing Indian Railway institutes will be sufficient to meet the objectives and targets of 5,000 students in the coming 5 years in the GSB. So, sir, there is also need to encourage participation of state universities and also private universities to affiliate them with the Gati Shakti Vishwavidyalaya. This will also help the government to achieve the objectives of the bill. Sir, in conclusion, it is a laudable initiative, sir, towards enabling development of the transport sector. The scope for discussion should have a pro-development approach and the additional ways in which the government can attract, retain and develop talent, promote research and provide infrastructure. Sir, with this, I support the bill. Thank you, sir. श्री स्वागत राय जी। Sir, I came with a mind to support the Central Universities Amendment Bill. But after coming here, I learned that officers of the CID, West Bengal, were prevented by Delhi police to raid the Jharkhand MLAs who had taken money from BJP. They have been arrested here and the Delhi police is not allowing us, our West Bengal police, to raid those persons. स्वागत आप बिल पर बोलिए, प्लीज बिल पर। That's why we protest against this fight of High Court orders. In spite of High Court orders, they are not allowing us to search the name of बिल के अलावा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। Sir, that's why
official work out. ये किस पे बोल रहे हैं? ये बिल पे नहीं बोल रहे हैं सभापति जी, आप रोकिए इनको। बिल के अलावा कुछ रिकॉर्ड बनी जाए। श्री रंगप्पा बारने जी। Thank you, sir, for giving me this opportunity to speak on Central Universities Amendment Bill 2022, which has brought by the government to convert the National Rail and Transportation. ये जो बिल के अतिरिक्त जो बोला है श्री स्वागत राय जी ने, रिकॉर्ड में नहीं जाएगा जी। माननीय सभापति महोदय, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन 2022 पर मैं चर्चा में भाग ले रहा हूं मेरी पार्टी की तरफ से। माननीय सभापति महोदय, शिक्षा हमें विभिन्न प्रकार का ज्ञान और कौशल्य को प्रदान करती है। यह सीखने की निरंतर धीमी और सुरक्षित प्रक्रिया है जो हमें ज्ञान प्राप्त करने में मदद करती है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो हमारे जन्म के साथ ही शुरू हो जाती है और हमारे जीवन के साथ ही खत्म हो जाती है। सभी के लिए जीवन में बेहतर शिक्षा और आगे बढ़ने के लिए सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है। वर्तमान युग में शिक्षा का महत्व बहुत आगे बढ़ गया है और लगातार बढ़ा जा रहा है। अब अगर हम अपना भविष्य बेहतर और उज्जवल बनाना चाहते हैं तो इसके लिए शिक्षा प्राप्त करना बहुत जरूरी है। शिक्षा के बिना हम जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे देश में लगभग हर राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालय मौजूद है। उत्तम और उच्चतर शिक्षा हेतु इन केंद्रीय विश्वविद्यालय की आवश्यकता करनी पड़ी है। पहले हमारे देश में ऊंचे स्तर पर शिक्षा पाने के लिए विद्यार्थी को बहुत परेशानी उठानी पड़ती थी। इस कारण इन केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना करनी पड़ी। हमारे देश में कुल 49 विश्वविद्यालय, जिनमें से 45 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, एक कृषि मंत्रालय, एक विदेश मंत्रालय और एक जहाजरानी मंत्रालय से अंतर्गत आता है। महोदय, साल 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय कानून पारित किया गया। इसके तहत देश के विभिन्न राज्यों में विश्वविद्यालय के गठन और उसके संबंधी फैसले करने के लिए प्रावधान किए गए। सरकार अब इसी कानून में संशोधन करके गति शक्ति विद्यालय बनाने का रास्ता साफ कर रही है। केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 में समर्थन करता हूं। महोदय, यह विधेयक गुजरात के बड़ोदरा स्थित NITI, जो अभी तक एक ड्रीम टू बी यूनिवर्सिटी है, जो कि इस विधेयक से एक गति शक्ति विश्वविद्यालय बनाने के बाद स्वायत्ता केंद्रीय विद्यालय बन जाएगा और इस संस्थान का प्रशासनिक नियंत्रण रेल मंत्रालय के पास होगा। महोदय, इस विधेयक के तहत इस यूनिवर्सिटी के दायरे को भी बढ़ाया जाएगा, जबकि पहले यह रेलवे मामले तक सीमित था, लेकिन अब इसमें पूरे ट्रांसपोर्टर सेक्टर और इस क्षेत्र में हो रहे सभी आधुनिक विकास कार्यों की शिक्षा इस यूनिवर्सिटी में दी जाएगी और छात्रों को इस दिशा के रिसर्च अवसर भी मिलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों के तहत यह बहुत अच्छा विधेयक है। महोदय, मैं सरकार द्वारा लाए गए इस विधेयक को समर्थन करता हूं। धन्यवाद। N. रेड्डप्पा जी। Thank you, Speaker, sir, for giving me the opportunity to speak on the Central Universities Amendment Bill 2022, which has been brought in my government by the government to convert the National Rail and Transportation Institute into full-fledged Central University called Gati Shakti Vishwavidyalaya. I would like to present my inputs on how the proposed university can act as a catalyst to boost the growth of the transport sector in the country. The union government has identified the transport sector
as one of the key drivers of economic growth. The transport sector is vital for economic growth as it is contributes around 6% of the GDP and over-employs 22 million people. The union government has making significant progress in the transport sector through the initiatives of the, like PM Gati Shakti, dedicated freight corridors and Bharatamala Pariyojana. Freight loading in the Indian Railways has been the highest 18.10 metric tons during 21-22. Dedicated freight corridors in the eastern and western regions of the country are also being developed. Secondly, establishing the Gati Shakti Vishwavidyalaya would address the skill gap in the transport sector. India's workforce in the transport and logistics sector has reached 2.5 crores and estimated additional workforce of 3 crores would be needed in the coming decade. The cost logistics in India is one of the highest in the world, at least 14% of the GDP. The Gati Shakti Vishwavidyalaya would help in the reducing the cost of logistics by skilling the workforce. There is a need managed to central universities in an efficient manner. Vacant faculty positions are a cause of concern. According to the Ministry of Education, over 6,500 faculty positions are vacant in central universities across the country. The vacant faculty positions must be filled upon on war basis, war footing, and guest faculty or ad hoc process should be engaged in the short term. Vacancies in the Indian Railways are to be filled on priority basis. There are total 2,98,428 vacancies in the Indian Railways. Out of these, almost 25,000 posts are vacant in the East Coast Railways and Southern Central Railways. Are large number aspirants are from Andhra Pradesh participating in the recruitment process. The recruitment process exams like RRB, NTPC should be streamlined by the following annual examination calendar to avoid delays and confusion. As a huge number of aspirants from Andhra Pradesh participate in railway recruitment, I request that railway recruitment zone should be established in Andhra Pradesh. Operationalization of the South Coast Railway Zone and expediting the compulsion of pending railways projects in Andhra Pradesh. Though 80 years have been passed since the bifurcation of Andhra Pradesh, the South Coast Railway Zone promised in the AP Reorganization Act 2014 has still not been operationalized. I request the Minister to retain the Valther division as it would help the growth of the backward regions in North Coast Andhra like Srikakulam and Vijayanagaram. Economically important railway projects like Kadapa-Bangalore line should be completed at the earliest. I also request the Union Government to support Andhra Pradesh by financing the pending portion of Bhadrachalam-Kovur railway line, which passes left-wing extremism affected area as the state is revenue deficit. Central universities and other prominent institutions of the Union Government are functioning from temporary campuses in Andhra Pradesh. As a compensatory measures after bifurcation of Andhra Pradesh, it was promised that many central government education would be established in Andhra Pradesh. But the central universities in Andhra Pradesh and Vijayanagaram, IIT and IISA in Tirupati are still functioning from temporary campuses even 8 years after the bifurcation of the state. I request the Union Government to expedite the development of the institutions by providing the adequate funds. I request the central government to provide sufficient funds to create facilities and appropriate facilities without further delay in Central University of Anantapur in Andhra Pradesh.
conclusion. The transport and logistics sector is rapidly expanding due to the special focus being placed in the sector by the Government of India. In this regard, establishing Gatisakti Vishwavidyalaya is welcome it. I would aid in reducing the skill gap in the transport sector, thereby kick-starting a virtuous cycle of economic growth and employment in the country. Thank you, sir. श्री रामकृपाल यादव जी। सर, माननीय सभापति महोदय, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा का आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं यशस्वी प्रधानमंत्री देश के श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में निश्चित तौर पर देश में क्रांतिकारी परिवर्तन तो पिछले 8 वर्ष में हुआ ही है। खास तौर पर उस शिक्षा में भी एक नई क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का माननीय शिक्षा मंत्री वर्तमान में जो हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, नई शिक्षा नीति पॉलिसी के तहत एक नया आयाम देने का काम किया है। महोदय, भारत सरकार को उस शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से लाया गया इस बिल का मैं हृदय से समर्थन करता हूं। माननीय मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। इस बिल के माध्यम से सरकार ने गुजरात में बड़ौदा स्थित नेशनल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट को सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तौर पे गतिशक्ति विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव लाया है। मैं पुनः माननीय मंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं और इसका स्वागत करता हूं। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी के साथ बेहतर अनुसंधान के लिए गतिशक्ति विश्वविद्यालय एक नई सोच के तहत सरकार ने गतिशक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना एक दूरदर्शी सोच के अनुरूप और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली जो एनडीए की सरकार है, नवाचार के लिए बधाई के पात्र हैं। राष्ट्रीय और सामरिक दृष्टिकोण से भारत में परिवहन को लेकर अपार संभावनाएं हैं, और चाहे वो वर्तमान सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन हो या डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का तीव्र निर्माण हो या देश के किसी भी कोने में 24 घंटे के अंदर सामान की डिलीवरी करने का सरकार का जो लक्ष्य है, सभी क्षेत्रों में काफी तेजी से काम हो रहा है और आगामी कुछ वर्षों में लगभग हम अपने सपनों को सच करने ही वाले हैं। हमारी जो जीडीपी है देश का, जीडीपी का पहिया परिवहन है और इसे तेजी से नचाने के लिए कई अनेक पॉलिसी लाई गई है, जिसमें एथेनॉल की पॉलिसी, ग्रीन फील्ड की पॉलिसी, हाइड्रोजन पॉलिसी और अब नया गतिशक्ति विश्वविद्यालय ला करके सरकार ने जिस तरह से काम कर रही है बहुत ही असाधारण है। और मैं समझता हूं कि ये सोच सरकार का जो विश्व स्तर पर इस तरह की यूनिवर्सिटी पहले से ही चलाया जा रहा है, उसको देश की धरती पर मैं लाने का जो काम वर्तमान सरकार ने की है, उसके लिए कोटि सी धन्यवाद देते हैं। मेरा मानना है कि गतिशक्ति विश्वविद्यालय जैसी संस्थान देश में न केवल तकनीकी और नवाचार लाएंगे, बल्कि दुनिया के अंदर भारत की कौशल क्षमता को एक अलग आयाम देने का काम करेगी। मैं ये निवेदन करना चाहूंगा इस चर्चा के माध्यम से, खासतौर पर माननीय मंत्री जी से, जो खासतौर पर बिहार को अच्छी तरह से जानते हैं, मैं निवेदन करूंगा बिहार के सबसे प्रमुख ऐतिहासिक विश्वविद्यालय पटना यूनिवर्सिटी की तरफ भी माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान ले जाना चाहते हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की मांग न जाने कितने जमाने से हो रही है। देश में जब यूनिवर्सिटी खुली थी, 5 वैसे
ये 5 में से एक स्थान पटना विश्वविद्यालय का है, जिसमें बिहार के लोग काफी दिनों से सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि हाल में ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी 2017 में पटना विश्वविद्यालय का जब गोल्डन जुबली समारोह मनाया जा रहा था, उसमें शिरकत करने का काम किया था। सरकार के पास देश भर में 10 प्राइवेट और 10 पब्लिक यूनिवर्सिटी है जो विश्व स्तरीय योग्य है, और पटना यूनिवर्सिटी भी इस योजना से जुड़े, इसके लिए मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा। वर्तमान में विश्वविद्यालयों की कमी से जूझ रही है। देश में प्रतिष्ठित कॉलेजों की तुलना में यहाँ न तो छात्रों को बेहतर रिसर्च लायक संस्थान है और न ही इन्हें माहौल मिल रहा है। वैसे मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय वर्तमान सरकार का, शिक्षा मंत्री का, प्रधानमंत्री जी का, कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार में अन्य जगहों पर एक मोतिहारी में और एक गया में खोला गया है, मगर बावजूद इसके मैं निवेदन करना चाहूंगी उसकी आवश्यकता है। आप जानते हैं कि बड़े पैमाने पर अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के योग्य नहीं रहने की वजह से बिहार के बहुत बच्चे देश के बाहर में जाने का काम करते हैं। देश और दुनिया में आईटी में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है, मगर महत्वपूर्ण शहर आधुनिक शिक्षा के लिए अब तक तरस रहा है जो पटना है, पटना है। चूंकि यूनिवर्सिटी पटना का ही नहीं बिहार का एक महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी है, और मैं समझता हूं कि यहाँ यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं होने की वजह से इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में, इसकी गुणवत्ता में बहुत कमी है, जिसकी वजह से बच्चों को दिल्ली और अन्य शहरों में बेहतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाना पड़ता है। और यही नहीं, वहाँ इतने गरीब बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं, उनके परिवार पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, बिहार की राजधानी पवित्र गंगा नदी के किनारे शानदार अतीत वाले पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा अगर भारत सरकार देती है, माननीय मंत्री जी ने इस पर कृपा करते हैं, तो मैं समझता हूं कि पाटलिपुत्रा की इस भूमि पर जो हमारी ऐतिहासिक भूमि रही है, उसमें ज्ञान की गंगा का देश में बहने लगेगी, और दूसरों राज्यों में जब उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाद बच्चों को जाना पड़ता है, उसमें खास तौर पर जो गरीब, हमारी जो सरकार की जो गरीब कल्याण, वर्तमान में गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार है, एक नया तरह का अवसर मिलेगा। और समझिए कि सरकार उसके लिए सरकार को मैं आभार व्यक्त करूंगा। इससे राज्य में उच्चतर शिक्षा का सारा सकारात्मक माहौल बनेगा। योग्य शिक्षकों का मार्गदर्शन से युवा शक्ति को एक तरक्की करने का अवसर प्राप्त होगा, जो बिहार के लोग हैं, बिहार के बच्चे हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से, केंद्र की सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री से विनम्र प्रार्थना करूंगा कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की कृपा प्रदान की जाए। इसे बिहार की जनता और पाटलिपुत्रा की जनता इस सरकार को आभार करेगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं पुनः ये जो विधायक है केंद्रीय विश्वविद्यालय for allowing me to participate in the discussion. Sir, I stand in support of Central Universities Amendment Bill 2022. Sir, the bill proposes to provide for converting the National Rail and Transportation Institute (NRTI) deemed to be university into a central university. With the establishment of this university, the broad achievements will be that it will create a cadre of best-in-class transportation talent, facilitate best-in-country industry career options, upskill and evolve the capability in transportation sector to cater to new industry demands, high quality education, research and skill development in various disciplines. Sir, the establishment of this Vishwavidhalaya, known as Gati Shakti Vishwavidhalaya, will also upskill and evolve capability in the transportation sector to cater to new industry demands, though
high quality teaching, research and skill development in various disciplines. Sir, the establishment of the university shall foster collaboration between public sector, private industry and academia. It shall create a digitally enabled environment that fosters and promotes the spirit of entrepreneurship among the students. Sir, with the establishment of the university, it will be possible to provide a base for in-depth research in transport sector, which is needed in the current scenario. As a central university will also be able to attract the best of academic industrial talent due to the stature of central university. Innovate programs relevant to the current industries. Sir, one is, sir, we will do that as well. Sir, we will do that. We must remember, sir, because of the premier institutions like Indian Institute of Technology and Indian Institute of Management, we were able to add to the workforce and give new opportunities to the youth. Sir, my only concern is that not everything should go to Gujarat. It should be equally distributed amongst all the regions. No, sir. Important is, I would also request that a University of Tourism and Hospitality should be established in Anantnag. Sir, at the same time, I will also join the protest against the misuse of the agencies. Shri K. Raman Naidu ji. We should work to facilitate. We should work. Thank you, Honorable Chairman, sir, for giving me the opportunity to speak on this bill. At the outset, I welcome the upgradation of the National Rail and Transport Institute in Gujarat to Gati Shakti University with broader scope, sir. Logistics is a key enabler of economic growth, and if we focus on logistics development, we can reach the goal of the $5 trillion economy which we are striving to achieve. In fact, sir, we can then create even higher goals for ourselves. To support this vision, there is a need to create more transport and logistic professionals, and to that extent, an institute of Gati Shakti is in the right direction, sir. Sir, India has been at the heart of many crucial developments in science and technology, be it the discovery of zero, the Raman effect, the study of bosons, also known as the God particle. Our ancestors have achieved the zenith of human progress. Moreover, our country was one of the first to establish the finest universities, sir, such as Nalanda, Takshila and also Mithila. However, sadly right now, sir, somewhere down the line, we have lost the edge globally. Considering this dire situation, I seek to highlight the issues and the possible solutions that the government can take up. Sir, as we all know, Indian universities are still struggling on the global rankings chart, though the number has been promising lately, which is 41. Last year, however, we still have not been able to crack the global rankings, sir. The reason for the underperformance of the universities are largely attributed to some of the following reasons, sir. Lack of global diversity in terms of foreign teachers and students, and lack of global repute, inadequate student to faculty ratio, and obsolete research facilities, sir. Factoring this, I suggest that this newly upgraded university have tie-ups with similar entities across the world globally while promoting indigenous knowledge and also innovation, sir. As I understand, the bill also provides for the establishment of additional university campuses and regional centers. Presently, such a campus is being proposed to be set up in Kolkata and a regional center in Kollam. Sir, considering the Indian peninsula to be the hub of maritime activity, I suggest that an additional campus could be set up in South India, in the North Andhra region to be specific, sir, where we already have a major port in Visakhapatnam. It will also bolster the Look East policy, sir. Sir, last point, then I'll finish. Sir. Sir, before moving on to broader national issues, sir, in 2014, the AP Reorganization Act was promised a slew of universities and institutions, sir, which include IIIT, NIT, IIM, ISER, Central University, Petroleum University. सभा की कार्यवाही दोपहर 4 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। बाद में करिएगा।
ban them from taking part in any competition for a long time, washing away their immense preparative efforts while also having a negative impact on their health, even resulting in their death in certain extreme cases. A bill seeking to curb this problem is a good step toward protecting and looking after the safety of our country's athletes. The next point is inclusion of athlete support personnel. Under this new bill, athlete support personnel described as any coach, trainer, manager, agent, team staff, official, medical or paramedical personnel or such other person working with or treating or assisting an athlete who is participating or preparing for at the national level or international level or to which this act applies, will also be subjected to consequences of violation. Considering that there are various cases of athletes testing positive due to supplements containing contaminated substances given to them by their coach or other staff members, subjecting them to punishments or fines or other disciplinary action will ensure more responsibility from their side as well as and may lead to a decrease in such cases. The next one is Therapeutic Use Exemption. This bill, in accordance with the international standards for therapeutic use, shall grant certain athletes undergoing medical treatment to be allowed to take medicines or drugs included in the list of banned substances as an exemption. As sports persons throughout their career may sustain injuries that require such treatment, it is another positive addition to the bill that will allow for regulation of banned substances as part of medical treatment. Few observations, sir. I would like to put up, a few of my observations. Most of the doping incidents in India are unintentional. In India, a number of athletes do not actually intend to use any enhancement drugs or steroids. However, a number of ordinary medicines that are meant to cure common pain or illness and even some daily used products also contain some amount of banned substances. A lack of knowledge regarding the presence of banned substances is the reason why most of the doping incidents in India takes place. Recent estimates project that these cases are about 12 per year. That is, one athlete per month is caught out due to not carefully checking everything that is put into their body or being appropriately educated on their rights and responsibilities. The next observation is the responsibility solely on the athletes. These regulations in the bill makes an athlete strictly liable for any banned substances entering their body, and therefore the burden of protecting their body against any such prohibited substances lies on the athlete themselves. So therefore this bill should have provisions that call for the National Anti-Doping Agency or the National Board to take responsibility for protecting the athletes from instances of accidental ingestion through proper education and also proper labeling of supplements, medicines or other products that are likely to contain these banned substances. So few suggestions, sir. Localized awareness programs. So across all the stakeholders who are part of the sports industry must be brought in, an IEC program. Information, education and communication programs must be brought in across all the stakeholders. India is set to adopt the international anti-doping rules verbatim without considering some ground realities and challenges that will eventually arise. The National Anti-Doping Agency's educational programs are conventional as the language mainly used is English, which may not be easy to understand by most of the athletes coming from rural backgrounds. Owing to this, there are many cases in which athletes have taken the plea of unknowingly committing the violation due to lack of knowledge. Thus, anti-doping programs and presentations should be conducted in the vernacular language of the athlete, as it helps in acquiring them better with the
technicalities of doping. The bill should also provide for a complete list of banned substances in regional languages to the athletes so that the athletes can have a better understanding relating to that. The increasing testing infrastructure. As per the NADA's regulations, an athlete is expected to conduct research before consuming any supplement. However, there is a lack of laboratories in India that carry out such specific tests on supplement, and if an athlete finds such a laboratory, the cost of carrying out the tests are high. Also, the suspension of country's national dope testing laboratory due to non-conformation to the international standards for laboratories posed additional problems for athletes, especially during the 2020 Olympics, for which they had to get tested in laboratories outside India. As NDTL was prohibited from carrying out any anti-doping activities, including all analysis of urine and, please conclude. And blood samples. The point towards lack of infrastructure required for the proper adoption of anti-doping regulations. NDTL should be improved and more such labs should be set up in different states of India. So trained personnel also have to be brought in across various levels. Mental pressures on athletes should be brought down. So with all these things, sir, I would like to say that the sports without ethics and fair play becomes a baseless competition. Hence, we need to protect our athletes. We need to bring back the true spirit of sports, one which is not tainted with any fear of losing. With these suggestions, I support this bill. Thank you. Thank you. Shri K.R. Suresh Reddy ji. Thank you, sir. At the outset, I would like to congratulate all the sportspersons who have excelled at the Commonwealth Games, who have kept our country's flag flying high. I welcome this bill, sir, and more so feel reassured that it is being piloted by a young minister who is not only young but also very keenly involved in sports activities. So I am sure the bill and the mood of this House in their presentations would be taken in letter and spirit by the Honourable Minister. I have a couple of suggestions and a couple of queries, sir. Now, India signed this UNESCO Convention against doping in 2005 and you ratified it in 2007. Now, why has it taken almost 15 to 16 long years to bring in this bill? We've seen the other day also on Antarctica, whenever international conventions are signed, treaties are signed, and when it mandates legislation, it seems to be taking a pretty long time, and I'm not in full know-how of why the delay, but the Honourable Minister can kindly explain that, sir. There are a couple of issues relating to the bill, sir. The World Anti-Doping Code, the WADA code, as we call it, makes a very clear distinction between majors and minors. And it sets a lesser punishment for the minors. In the bill piloted by the Honourable Minister, if you see Clause 2, Subclause D of the bill, athlete is defined as any person. Now, to be more specific, the bill can contain a separate subclause under Clause 2, which defines minors as persons below the age of 18. And further, Clause 6, which talks about the consequences of anti-doping rule violations, insert a separate provision which states that minors will be subjected to lesser punishments, like letting them off with a warning, decreasing the duration of suspension, and not basically publishing the name of such minor who has committed this anti-doping violation as under your Clause 27.1. The other WADA code guidelines, sir, which talks about the significance and independence and impartiality of the National Anti-Dope Agency, the NADA. However, the way in which the current bill is structured
the central government has its own say in appointing and removing the Director General of NADA, thereby breaching the ideals contained in the WADA Code. I suggest that the bill should have a provision which states explicit qualification for the Director General's appointment under Clause 15, Subclause 1, sir. Director General should be a person who excels in this activity. It should not be meant for any retired officials, or it should not be meant for any political adjustments, sir. So if the bill is very clear, it makes it easier for the government to move in that direction. And now coming to the removal of the Director General, Clause 15, Subclause 8 defines the grounds for removal as a proven misbehavior, incapacity, and then the third is such other ground. Now the meaning of such other ground is not very clear. I suggest that the phrase such other ground be defined more specifically so as to ensure no unfettered discretion being used by the central government in the Director General's removal, sir. These are being very specific because you are reflecting the UNESCO Convention, and you emerging, India today emerging not only as a big financial strong nation, but also in the sports we are emerging as a very strong nation. So these very clear descriptions in our law makes it in tune with the various laws in other developed countries, sir. And the same analogy applies even in the disciplinary panels and appeals panel also. They face the threat of government interference. The grounds of removal are not specified in clauses 1 and 12 respectively. I suggest that these be stated in the text of the bill itself. And finally, on educating the people about the demerits of doping which spoils the athlete's career, Part 4 of the UNESCO Convention against Anti-Doping in Sports requires state parties to engage in imparting educational programs on anti-doping. It also requires states to provide accurate information on the harm of doping to the ethical values of sports, the health consequences of doping. The government can take note of these obligations and create educational sensitization programs for the athletes. Such programs will also help prevent negligent or unknowing violations of the anti-doping bill, sir. With these, I welcome the bill, sir, and I would also like to place on record that I come from Nizamabad, where the world boxing champion Nikhil Zareen comes from. So I'm very proud that today I've been able to be part of this bill. And of course, Telangana, like rest of the country, today has been producing many wonderful sportspersons who have excelled internationally. So it is not just confined. Of course, Haryana has always been a very good example for us, inspiration for us. But today, the entire country is working on those lines. Now, keeping this in mind, the state of Telangana, the government of Telangana has also been developing and encouraging sports in a similar manner by not just through educational, sir, but also in terms of very good budgetary support. Thank you. So I welcome the bill, sir, and I congratulate the Honourable Minister. Thank you. Dr. John Britasji. Thank you, sir. At the outset, let me salute General D.P. Watts. He has been dispassionately objective, and he even went to the extent of proposing inter-caste, interreligious marriages to have better breeds. I don't know whether Anirudhji would subscribe to his view, and I would say that General is different, and I would appreciate it. Sir, I really wanted to dwell on the nuances of the bill. However, many of the points which I want to speak have already been spoken here. Nevertheless,
we have so much of concerns with regard to the structure and who all will be part of the board, the independence of such bodies, what could be the rules, what could be the criteria, all sorts of things actually are kept in wake. Sir, I don't want to tell about the suspension of the accreditation of NDTL, which happened in 2019. Devendra was kind enough to point out that. It was a shame for us. What would the government do to avoid such a, I would say, such an incident which made us to lose our peace? Sir, we have a prominent sports person, P.T. Usha ji here. Devendra and the General were lavishly talking about Haryana. They should have at least spoken about Kerala, because we have a social ecosystem whereby we promote sports. That is the peculiarity of Kerala. General Watt spoke about that. I told that he is a general with difference. He should be sitting here with us. Okay. Sir, just in July, 2 of our brilliant athletes were debarred. And sir, this bill should be providing us a window to the situation that is existing now. Our minister is ebullient, young, dynamic, though he is very active in politics also. And I would request that he should concentrate on sports little more. As much as he is so enthusiastic about the political happenings surrounding. Sir, as we all know, sports, we have no religion, caste, creed, language, color or sex. It is universal. In India, everyone loves sports. Everyone wants Indian sports persons to excel. But sir, a country with 1 billion plus population, we have certain achievements. Is that what is required now? Don't we need to, tread ahead, progress? And Anurag ji, just ponder over the budgetary allocations you have. You should be using your political clout to increase the allocation, which you are not doing. Actually, the budgetary allocation has gone down from 25 crores, it has gone down to 16 crores. This is the situation. And Khelo India program currently accounts nearly 30% of the sports budget. Sir, we need to have absolute increase and specific allocation to enhance the sports in this country. Sir, hardly 0.07% is the allocation. There are small countries like Romania, Latvia, etc., which allocate more funds. Please ask Ushaji, please ask her how much the sports person require. And I would request that you should consult her. Don't make us sit here alone. You should consult her on sports. You should use your talents also. Sir, I have a suggestion. The minister should take interest in such a way that a portion of the CSR earnings should be demarcated for the sports activities. That should be propagated and promoted. Sir, we have to catch our people at young age. That's how we had. Honourable member, Sir, I would just come to one or two small points more. Anurag ji, we should be perturbed over the politics that are in our sports federations. We have many federations. How many federations have been derecognized due to mismanagement, lack of transparency, lack of correction? Even in our Indian Olympics Association, one of your friends in BJP is fighting with another rival group. And too much of politics in sports bodies. Sir, 50% of the sports bodies are headed by politicians. Do you want to have that much of politics on sports bodies? I have no objection to Devendra becoming a sports authority. He is passionate about sports. But think about those people who do not have any knowledge about the domain of sports, presiding over sports empires, only for narrow parochial interest. You have to have a control. I know that your limitations, because some of the big wigs are presiding already over some of the sports federations. I don't want to name them, which you know that. You're smiling. Your smile gives us, obviously, an answer to the question I raised. Sir, cricket is overbearing. I have no issue. We all talk about the money they generated from the market, say about 50,000 crore.
But think about other games and sports. Don't you want, we need to have a even structure in our sports culture. We don't want to neglect, we don't want to denigrate any vertical of our sports, sir. So I would request the Honorable Minister to have a wholesome view. And last point, sir, sports medicine. When we talk about this doping, please understand that we got a person like Messi because his hormonal deficiency were identified when he was an adolescent. We should develop sports medicine as a counter to the doping that is happening, counter to the drugs. Thank you. And we have Ayurveda in Kerala. He just comes to meet few press persons in Kerala. He should come and meet us also. We will suggest you the ways where you can use Ayurveda to inculcate and to have sports medicine. Sir, the last point I want to make is that... Your last point was 2 points back. Last. This is last. Sir, we have spectators' interest. We should not limit the sports to be something of the spectators. We should have participatory element in sports. I would request Honourable Minister to consider these points. There are so many nuances which I wanted to dwell out on the bill, but many persons have already spoken about that. So I would earnestly urge our young minister to see that something is done spectacular. Thank you. Thank you. माननीय श्री संजय सिंह जी। धन्यवाद मान्यवर, आपने इस एंटी डोपिंग बिल पे मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मान्यवर, जब हम लोग आज इस बिल के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो हमारा सौभाग्य है कि अपने जमाने की उड़न परी जिसको कहा गया और जो इस समय इस सदन में है पीटी उषा जी, उनका भी हम सारे लोग अभिनंदन करते हैं उनके रहते हुए इस बिल पर चर्चा। मान्यवर, अगर मैं आम आदमी पार्टी की बात करूं तो जब हम इस बिल पर चर्चा कर रहे हैं तो हिंदुस्तान के मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी जिनकी गुगली से अच्छे अच्छे विकेट गिर जाते थे, हरभजन सिंह जी भी हमारी पार्टी के राज्यसभा के सांसद। मान्यवर, ये बिल हम सब के लिए दूसरा गेंद उनकी फेमस गेंद हुआ करती थी हरभजन सिंह जी जिसका जिक्र कर। तो मान्यवर, अनिल कुंबले की भी गुगली याद कर। तुम क्यों ले रहे हैं? नहीं, सबकी है। हमने ये कहा कि हमने अपनी पार्टी की ओर से राज्यसभा के सदन में हमने लाने का काम किया। मान्यवर, ये बिल जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे एक अच्छी बात इसमें लगी कि बिल स्टैंडिंग कमेटी में गया, उसके बाद जनता से राय मांगी गई, उसके बाद लोकसभा के पटल पे लाया गया और अब राज्यसभा में चर्चा में आया है। बहुत अच्छी बात है कि सघन रूप से इस बिल के ऊपर चर्चा करके कई स्तरों पर उसके बाद यह बिल लाया गया है। और जब डोपिंग टेस्ट में लोग पॉजिटिव आने के बाद उनका कैरियर चौपट होता है तो बड़े बड़े अखबारों की हेडलाइन बन जाती है, उनको खेल की प्रतियोगिता से वंचित तो रखा जाता है, लेकिन उसकी टेस्टिंग सही थी या गलत थी, उसके साथ न्याय हुआ या अन्याय हुआ, इसके बारे में फिर पूरे जीवन भर उसके बारे में कोई सोचता नहीं, पूछता नहीं, और उसको हमेशा खेल बिरादरी और राष्ट्रीय स्तर पर उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है मान्यवर। और इसमें सबसे ज्यादा जो मामला मुझे याद है मान्यवर, वो हमारे युवा होनहार पहलवान नरसिंह यादव का मामला मान्यवर। हिंदुस्तान से डोपिंग टेस्ट पास करके गए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ओलंपिक के खेल में उनको फेल कर दिया जाता है। मैं समझता हूं कि इस बिल से अब ऐसी घटनाओं से हमें मदद मिलेगी जहां पर राष्ट्रीय स्तर से खिलाड़ी पास होकर राष्ट्रीय नाडा से पास होकर खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में जाता है और वहां उसको फेल करके पीछे कर दिया जाता है। इसलिए मैं आम आदमी पार्टी की ओर से इस बिल का पूरी तरीके से समर्थन करता हूं। देश के हित में है, अच्छा है, खिलाड़ियों को इससे सुरक्षा मिलेगी। लेकिन यहां चिंता व्यक्त की दीपेंद्र हुड्डा जी ने, यहां चिंता व्यक्त की सदन के दूसरे हमारे माननीय सांसदों ने कि ये कई बार ये
डोपिंग के चक्कर में लोग फंसते क्यों हैं खिलाड़ी? अतिरिक्त ताकत लेने के चक्कर में फंसते हैं। वो अतिरिक्त ताकत लेने की सोच उनके मन में आती कहां से है? क्योंकि जब वो मेडल की रेस में जब पीछे होते जाते हैं, सोचते हैं चलो किसी तरीके से मेडल हासिल करते हैं, लेकिन कई बार उनके साथ साजिश भी होती है। उनके साथ जो टेस्ट होता है, ऐसे इंजेक्शन जानबूझ के उनको दिए जाते हैं जिससे वो टेस्टिंग में फेल हो जाए। और इसलिए इस बिल का होना बहुत आवश्यक है कि ऐसी तमाम साजिशों पर, ऐसी तमाम कार्रवाइयों पर और ऐसी टेस्टिंग कर करके जो हमारे खिलाड़ियों को पीछे रखा जाता है, उससे उनको बचाया जा सके। लेकिन इसके साथ साथ क्या खेल के प्रति हमारी सरकार का ध्यान है मान्यवर? या माननीय मंत्री जी बैठे, मैं आपके माध्यम से बड़ी विनम्रता पूर्वक उनसे पूछना चाहता हूं, 130 करोड़ की आबादी वाले हिंदुस्तान में आप अच्छे खिलाड़ी कैसे बनाएंगे जब आप खेल का बजट मात्र 3,000 करोड़ रुपए रखते हैं? 3,000 करोड़ रुपए का बजट आप 130 करोड़ की आबादी में रख रहे हैं। और 2021 में आपने खेल का बजट कम किया, इस बार थोड़ा बहुत आपने बढ़ाया। तो खेल को इतने उपेक्षा भाव से क्यों देखा जाता है? खेल के ऊपर हमारा बजट क्यों इतना कम रहता है? खेल की तरफ हमारी सरकार का ध्यान क्यों नहीं जाता? और जब आज एंटी डोपिंग पे आप चर्चा कर रहे हैं मान्यवर, पूरा देश हम लोगों को सुन रहा होगा और खास तौर से हमारे वो नौजवान सुन रहे होंगे जो हरियाणा के गांवों में, उत्तर प्रदेश के गांवों में, बिहार के गांवों में, पूरे देश के अंदर दिन रात सुबह 4 बजे उठ के शाम तक मेहनत करते थे कि उनको देश की सेना में भारत के लिए मरने मिटने का मौका मिलेगा। उनको भी आपने बगैर डोपिंग टेस्ट के फेल कर दिया। उनको तो बगैर डोपिंग टेस्ट के आपने फेल कर दिया, भारत की सेना में जिनके मन में जाने का जज्बा था। ये अग्निवीर योजना लाके, ये 4 साल की योजना लाके उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया आपने। मान्यवर, मैं आप लोगों से, आपके माध्यम से इस सरकार से कहना चाहता हूं, कभी आइए देखिए और खेल को बढ़ावा कैसे दिया जाता है। खुले मन से आइए खेल मंत्री जी, चलते हैं दिल्ली के सरकारी स्कूलों में, जहां अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने मिलकर सरकारी स्कूलों के अंदर स्विमिंग पूल का निर्माण किया है। सरकारी स्कूलों के अंदर हॉकी के ग्राउंड बनाए हैं, एथलीट के ग्राउंड बनाए हैं, वर्ल्ड क्लास हॉकी के ग्राउंड बनाए हैं, जहां पर बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन तैयार करने के लिए मिशन एक्सीलेंस की योजना दिल्ली की सरकार लेके आई। और केजरीवाल जी की सरकार कहती है खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा मदद, आर्थिक मदद की जरूरत तब होती है जब वो उसकी खेल की प्रतिभा को निखारना होता है। आप मदद कब करते हैं? कोई ओलंपिक में गोल्ड पा गया, कोई सिल्वर पा गया, कोई एशियाड में मेडल पा गया, उसके बाद कई राज्य सरकारें उसके पीछे कोई 20 लाख, कोई 50 लाख, कोई 1 करोड़ के सहयोग देने के लिए होड़ लग जाती है। लेकिन जो खिलाड़ी संघर्ष कर रहा होता मान्यवर, जो खिलाड़ी मेहनत कर रहा होता है, जिसके खेल में प्रतिभा है, जो ओलंपिक में गोल्ड पा सकता है, सिल्वर पा सकता है, ब्रॉन्ज पा सकता है, जो एशियाड में मेडल पा सकता है, उसकी मदद करने के लिए क्या योजना है? ये योजना दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार लेकर आई। और मिशन एक्सीलेंस में हम दिल्ली के खिलाड़ियों को, प्रतिभावान खिलाड़ियों को, जिनके अंदर संभावना है खेल के अंदर बड़े बड़े खेल प्रतियोगिताओं में मेडल पाने की, उनको 16 लाख रुपए तक की सालाना मदद करते हैं मानवर, 16 लाख रुपए तक की। और दूसरी दिल्ली सरकार की योजना है मानवर, प्ले एंड प्रोग्रेस की योजना, प्ले एंड प्रोग्रेस की योजना। इसमें ऐसे बच्चों को हम लोग तैयार करते हैं जो आगे चल के अपने बचपन से ही खेल के अलग अलग खेलों में, जिसमें उनकी विधा है, जिस खेल में वो अच्छी प्रतिभा रखते हैं, उनको मदद करके उनको आगे बढ़ाना और उनको मेडल के लिए तैयार करना, उनको बड़ी बड़ी खेल प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना। और दिल्ली की सरकार ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई सर, खेल का विश्वविद्यालय। और ये अपने आप में एक ऐसा अनोखा खेल का विश्वविद्यालय है जहां खेल को ही उसकी पढ़ाई मानी गई है, खेल को ही उसकी डिग्री मानी गई है, खेल को ही उसका जीवन माना गया है। वो अलग अलग खेलों में जिसमें भी वो जाना चाहता है, उसके खेल के हिसाब से उसको स्टेडियम उपलब्ध कराया जाएगा, उसको मदद की जाएगी और उसको हॉस्टल की सुविधा, खाने की सुविधा, रहने की सुविधा, खेलने की सुविधा, उसके खेल की प्रतिभा को ही उसको डिग्री माना जाएगा।
ऐसा खेल का विश्वविद्यालय दिल्ली की सरकार ने, केजरीवाल जी की सरकार ने बनाया है। तो इसलिए मान्यवर, हमने दिल्ली के अंदर खेल को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। मैं फिर से आपके माध्यम से इस बिल का समर्थन करते हुए सरकार से अनुरोध करूंगा, हमारे खेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि ये जो खेल का बजट है, ये ऊंट के मुंह में जीरा है, इस बजट को बढ़ाइए। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो अर्जुन अवार्डी हैं, जिनको बड़े बड़े अवार्ड मिले हैं, जिनको बड़े बड़े मेडल मिले हैं। ऐसी कहानियां पढ़ने को मिलती है कि वो अपना मेडल बेच के कहीं मूंगफली बेच रहे हैं, कहीं चाय की दुकान लगा रहे हैं, कहीं ठेले लगा रहे हैं, कहीं सब्जी बेच रहे हैं। ये जो खबरें आती हैं मान्यवर, ये दिल को दुख देती हैं, तकलीफ देती हैं। मैं जिस उत्तर प्रदेश से आता हूं, वहां की आबादी 24 करोड़ की है, और उस 24 करोड़ की आबादी में मान्यवर, जब हम पढ़ते हैं ओलंपिक का मेडल, एशियाड का मेडल, कॉमनवेल्थ का मेडल, और उसमें हमारे प्रदेश का नाम नहीं होता, तो हमें तकलीफ होती है। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि खेल की ओर ज्यादा ध्यान दीजिए, खेल का बजट बढ़ाने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। थैंक यू मिस्टर संजय सिंह जी। नाउ श्रीमती पीटी उषा। प्लीज 238. 238. Yeah. A member while speaking shall not refer to any matter of fact on which a judicial decision is pending. Yeah. He was referring about Agniveer, and Agniveer matter is pending with the Supreme Court. So मैं आग्रह करूंगा कि इसको नहीं है, वो सब जुडिस है, वो मामला। प्लीज सर सुशील जी, नो ये मामला प्लीज sit down. Please sit down. Please sit down. Please sit down. Please sit down. Yes, raise the point of order. You please sit down. Sir, it is very clear, sir. Kindly sit A down. member while speaking shall not refer to any matter of fact Sushil ji, on which please. a judicial Sushil ji, decision you is need not pending. repeat. It will be examined by the chair. Please sit down. Please sit down. Please sit down. Please sit down. Excuse me, you please sit down. You please sit down. One more. Minister. Sir, I didn't want you to intervene. I'll reply in detail later. But I just wanted to apprise the House, because the Honourable Member right now mentioned about Uttar Pradesh. I just want to say, इस देश में केवल एक राज्य ऐसा है जिसने अपने ही राज्य के एथलीट्स को टोक्यो ओलंपिक्स के बाद सम्मानित नहीं, बल्कि देश भर के जितने एथलीट्स मेडल जीत कर आए थे, उन सबको सम्मानित करने का काम किया। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने योगी आदित्यनाथ जी ने करने का काम किया। तो ये हाउस पे थोड़ा रिकॉर्ड स्ट्रेट रहे। मैं सारे बातों का उत्तर बाद में दे दूंगा, मुझे उसमें कोई चिंता संकोच नहीं है। Thank you. Srimati P.T. Usha. Please. Respected Honorable Chairman, sir. Honorable Vice Chairman, sir. My most respectable gurus, mentors and fellow members of this august house, as today is my maiden speech, I hope you consider me as your humble sister, and I also hope you will forgive me for any mistakes in my speech. Sir, with all your blessings, let me begin my speech by paying homage to all our freedom fighters, our soldiers, policemen, and all the great noble-hearted individuals who had laid down their lives for our nation. It is because of their sacrifice and everyone who are in service of our nation that we are now living a loving and peaceful life. It is because of their service that has made the very foundation of this great nation that we are able to enjoy the freedom which is given to us, and hence we also have commitment towards our nation. As nominated Lok Sabha member at age of 58, I am grateful for the good fortune of taking my first step in the temple of democracy. I took oath on 20th July in the name of God to uphold the constitutional values, and all those days, like a grade 1 student, I have been watching the proceeding of this sacred house.
I also had the great opportunity of representing my country in more than a few hundred events as part of my sports tapasya. I would like to look at the democratic process of post-independent India through the open eyes of an athlete. Since independence, we have been providing various facilities for improving our sport. Our proud sports personalities have achieved rare achievements in hockey, wrestling and football at Olympics venues. Our sportsmen have several achievements that inspire the younger generations in athletics, tennis and other sports. Hockey legend Dhyan Chand and his team. Mevalal ji in football, K.D. Yadav ji in wrestling, Ramanatha Krishnan and Amritraj brothers in tennis. The mighty Milkha Singh ji in athletics. And though India's first female Olympian Mary D'Souza ji. All of them are our true legends. We have achieved great feats in 1980s, but later on, unfortunately, we lost the upper hand in hockey, football and wrestling. With the 1983 World Cup trim, the prestigious of our nation in the field of cricket has risen once again such that we are the world champions in another major sporting event after hockey. In the 1960 Rome Olympics, we lost the medal of Milkha Singh ji by fraction of a second, and it was repeated once again in 1984 with a difference of 1/100th of a second. Thereafter, me being a girl from the remote place of Payoli in Kerala, a village without any facilities to pursue my sporting dreams, met the spoke for the first time to the then Prime Minister, late Srimati Indira Priyadarshini ji, which was of the most precious moment of my life. Then, by running up to year 2000 and training my younger generation till yesterday, this devotee has dedicated herself to the betterment of sports, Indian sports, and once again had the rare privilege of meeting Honorable Sri Narendra Modi ji, the most admired Prime Minister among the world nations. All the while we can count the achievements of our nation in the field of sports since 1984. We embraced the sports as a self-criticism as there was no overall growth. I wish to mention that our achievements in athletics, tennis, weightlifting, cricket, chess, billiards and snooker, badminton, boxing events are huge. From the time when our beloved Vajpayee ji became the Prime Minister until 2014, only a few silver stars were seen performing at bigger stages. In terms of infrastructure developments, in addition to things such as training grounds, conditioning facilities and improved diets, better treatment facilities were not adequately available then until come 2014. In the 1980s, I used to travel from Payoli by train for up to 4 days to reach Delhi to work out on athletic tracks. But now I am happy to state that after 2014, our country has been making enviable progress in various fields, including unparalleled achievements in field of sports. And that is why today's generation and experiencing district to district better training facilities in varieties of sports. Facilities such as synthetic tracks, swimming pools and gymnasiums and other amenities are being made readily available. The new generation sportsmen are now getting better coaches, scientific diets and resting facilities. But there is one department which needs more emphasis, and that will be the field of sports medicine and sports science. The front-running top 10 nation in the field of sports and Olympic has backing of modern sports science technology and support of sports medicine system. Injuries are an inseparable part of the sports, and the Department of Sports Science and Sports Medicine has an important role to play in helping sports personalities recover from injuries as fast as possible in bringing them back to training in a short period of time. Unfortunately, in our country, this branch is still in its infancy.
We need to have immediate and special attention to this sector. This is the time to become self-reliant, and in those terms, I strongly suggest that sports science, sports medicine and coaching should come under the scheme of our beloved Prime Minister Sri Narendra Modi's dream project, Atmanirbhar Bharat. Now, all this has been mentioned only as an introduction, but on the contrary, over the past 20 years, there has been general tendency towards doping, or what we can call as an abuse of performance-enhancing drugs and steroids. According to today's statistics, India ranks third in the number of individuals who have been tested positive for steroids and punished for doping. In this context, the nation which is ranked one in the number of individuals tested positive for steroid has already been excluded from the world sports by other countries. I wish to mention that this serious concern which need to be addressed immediately. We are yet to open our eyes to abuse of doping in our country, which was once earlier confined only to the senior national levels, has now reached the juniors, college and school level, which is serious concern that need to be addressed. When talented sports individuals are abusing performance enhancing drugs, they are not only sacrificing their career and life for short-term benefits, but they are also spoiling the talents of upcoming sports individuals who work very hard to improve their performance levels. In addition to, they are also tarnishing the image of our country among other nations, and through this, we are also destroying the dignity and legacy of our ancestors that worked very hard for it. To control this alarming situation, with the special interest of our sports minister, the Lok Sabha has passed the anti-doping bill last week. While this phenomenon can be controlled to some extent through legislation, yet still more effective measures are impressive and needed to be taken. We should create awareness about the abuse of performance-enhancing drugs in sports among athletes, coaches and parents, and there should be no delay in taking timely action and appropriate ban against those who test positive of doping. At the same time, the activities of National Anti-Doping Agency, NADA, should be accelerated and should be given the freedom to operate without any other obstacles. National Anti-Doping Agency and the National Dope Testing Laboratory in New Delhi should get necessary financial freedom, and all competition must be brought under the watchful eye of NADA. And not only for the competition, but also for the preparatory time also should be tested. For instance, in a competition with the participation of 800 athletes, the NADA authorities are used to come up with just 10 anti-doping kits, and it can be undoubtedly said that such measures are happening because of the financial constraints and lack of adequate manpower. It is only through the timely interventions of our legislatures, state these people and the people of representatives who should be more assertive regarding matters related to sports and should be every means ensure that a better opportunity is created for our sports individuals to showcase their true talent and potential among world nations. If the motto prevention is better than cure is implemented scientifically and educatively in the field of sports, and we as a nation which has always dreamed big and hoped good for our people, I can indefinitely say that in the next 10 years we will become one of the top 10 sporting superpower among the countries of the world. I wish to mention that we have reclaimed the Olympic medal in 2020, which we had previously missed in 1960 and 84. Now let us give support to our upcoming sport talent by all means and respect so that they can compete vigorously in the upcoming Olympics and World Championships and win with the flying colors, so that millions of Indians living in other countries and our Bharat can stand with their heads held high. Today's faith is the strength of tomorrow. On this note,
Let us all work for the betterment of new and strong India. Let me conclude my speech by extending my heartfelt gratitude to our beloved Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, who is very keen on development of sports in country. As a daughter of Bharat Mata, I bow my head before her and wish that I could serve this nation for the betterment of sports. Thank you, Honorable Chairman, who gave me this opportunity. I thank everyone once again from the bottom of my heart. Namaskar. Thank you, Srimati Piti Usha. Now Dr. Fausia Khan, 4 minutes. Why 4 minutes, sir, to me? Members or more. Anyway, thank you very much. Sir, I would like to begin by first welcoming this bill and saying that my family is a great fan of Sachin Tendulkar and Sunil Gavaskar, sir. Like millions of other families in our country and even outside our country, particularly the youth, not because they have been successful sports persons, but simultaneously also because they are icons and an inspiration of what the field of sports has groomed them into as human beings: righteous, disciplined, determined, humble, punctual, hardworking, unbiased, men of integrity. So generally people thrive to become like their ideals and adopt their ways of life. The current expansion of the field of sports itself may be attributed to this idealism. There are thousands of such icons who are role models for the youth. Sports is a field that inspires love, affinity, and brotherhood. And the general behavior of great sportsmen impacts the way our youth think or perceive life. While discussing this bill, this must be kept in mind that while addressing the issue of doping in sports, we are also trying to address the value system in our youth. Sir, righteousness has always been a part of Indian tradition. I think most misguided sports persons are not introduced to doping when they reach international level, but they are introduced to doping much earlier, when they participate in state or national level competitions. And that is where our focus must lie. This is necessary. Therefore, I thank the Minister for having brought in this comprehensive bill, which covers not only sports but also gives a message that values matter, not only for the youth of India but also to the global community. So the growth of sport is a definite indicator of the growth of the nation. I must congratulate our young Minister Anurag Thakurji for his vision, dedication and contribution, and for the fact that we are winning medals after medals in various competitions during these days. The bill, I think, is well framed, but it is evident that scope has been voluntarily left for the rules and regulations. I have some suggestions that could be incorporated by the Minister. Enhancement drugs like amphetamine and steroids have been evolving even from before the 1940s with the evolution of the pharmaceutical industry, and rules and regulations also have been simultaneously evolving. Also, sir, changes are coming in accordingly in the World Anti-Doping Code. At the same time, masking drugs are also being developed in the natural course of evolution. Therefore, as I think you have thought about, awareness programs are very, very important. They are already being carried out, but many more are needed. Sir, I'll just give my pointers because I have less time. I feel that we need to carry these awareness programs at all levels, not just at national or international level, but state level, district level, down the line, because that's where the program begins. And we have a very well-established network in the nation. This network is the associations, the federations, the clubs. I think they should be included in this because this network percolates down to the taluka level, sir.
So, before every competition, a session and a certification on anti-doping must be made mandatory as a precursor for the permission of the competition to the associations. If that is done, the association becomes accountable to ensure that awareness for anti-doping is carried out by them. Also, sir, screening. Screening is not only necessary at the international level, but also down the line to the district level. So just give me 1 minute. Because you have mentioned a big lab which is worth crores of rupees, but what we need are little micro labs, mobile labs, or like simple glucometers that we have to check our sugar. In the same way, if we can screen out doping at the little lower level, that would be, and if made mandatory for the associations, this would produce very good results. So guidelines must be circulated. Accountability of coaches, accountability of associations have to be ensured, and we have to be, looking at the last point is that off the shelf drugs that are available, especially the powders, the proteins, the whey proteins that are available in the for the gyms. Sir, I think the performance enhancers, the dietary supplements, all this should be looked into. I have much more to say, sir, but I will only end by saying that, where there is a computer, if you detect the virus, detection is not our aim. You may detect the virus, but the virus has to be cured, and that cure has to be our aim. Thank you very much. Thank you very much.